Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है. So guys, FSSAI CBT 2 exam is over and you people have performed really well. काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आप लोगों ने. अब बात ये आती है कि FSSAI के लिए जो भी हमने पढ़ा है, whatever we have studied for FSSAI, Will it be necessary in any other exam? क्या कोई दूसरे एग्जाम में काम आएगा या फिर FSSAI का रिक्रूटमेंट नेक्स्ट टाइम कब आने वाला है, इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, सो वेलकम वंस अगेन. एंड तो FSSAI की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली इसका जो रिक्रूटमेंट है वो लास्ट टाइम आया था 2019 में एंड आफ्टर दैट 2021 में आया था. सो देयर वाज अ गैप ऑफ 2 years. कोई गारंटी नहीं है कि फिर से 2 साल के गैप में आएगा. ओके, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट 2023 में एक वैकेंसी. बट अगेन वो जो वैकेंसीज होंगी दैट इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब कोई ऐसा पक्का नहीं है न्यूज़ की आएगा. बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2023 में भी आएगा अराउंड एट द सेम टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर. ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, बेसिकली अवेयरनेस नहीं था, आता तो था बट स्टूडेंट्स वर नॉट अवेयर, वाज दैट फूड सेफ्टी ऑफिसर. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि मैं जनरल ग्रेजुएट हूँ, आई एम अ जनरल ग्रेजुएट, नॉट फ्रॉम फूड साइंस बैकग्राउंड. ओके, सो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सो यू हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी, दैट इज FSSAI असिस्टेंट. ओके, सो क्या हम असिस्टेंट के क्लासेस करने वाले हैं? जी हाँ, हम असिस्टेंट के भी क्लासेस करेंगे. ओके, सो असिस्टेंट के क्लासेस में आपके जनरल मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अभी नहीं होगा. मैं आपको जो फूड लॉज, फूड इनिशिएटिव्स पढ़ाता था ना, FSSAI इनिशिएटिव्स, आई विल ऑल्सो बी टेकिंग 1 क्लास फॉर दैट इन अ वीक. ठीक है, आपको हर दिन एक क्लास मिलेगा बिकॉज यू डोंट हैव, सिर पे आपके कोई ऐसा एग्जाम नहीं है अभी. ठीक है, सो आपको हर दिन एक क्लास मिलेगा एट 12 PM. द टाइम इज सेम. ठीक है, टाइम हमेशा 12 बजे रहेगा. ठीक है, मीनाक्षी मैम ऑन मंडे, मी ऑन ट्यूसडे, हिना मैम ऑन वेडनेसडे, वर्षा मैम ऑन फ्राइडे एंड आकाश सर ऑन थर्सडे. एंड अगेन मैं सैटरडे को आपके लिए एक और क्लास लेके आऊंगा दैट इज रिलेटेड टू द FSSAI इनिशिएटिव्स, बट उसको स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम है. ओके, वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, तो एक छोटा सा अवेयरनेस है कि जितने भी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और उनको फूड साइंस और फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में नहीं पता है. मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, जिन्होंने भी FSSAI का एग्जाम दिया है, यू पीपल आर वेल अवेयर अबाउट द एलिजिबिलिटी. आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पता है. लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्रीकल्चर से BSc किए हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, कोई भी स्टेट में, ठीक है, अगर आपके स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है या फिर FSSAI फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे या टेक्निकल ऑफिसर जैसे वैकेंसीज लेके आता है, देन यू आर एलिजिबल और आपको वहां अप्लाई करना चाहिए. सर अप्लाई तो कर देंगे, पढ़ेंगे कैसे? आपको रोज 1 घंटे का टाइम देना है इस यूट्यूब चैनल पे 12 बजे, ताकि आप चीजों को अच्छे से पढ़ पाओ. ओके, सो उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट इज एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, और रोज 12 बजे क्लास आपको अटेंड करना है. मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि 2 दिन में 3 या 4 क्लासेस अटेंड करो. यू कैन अटेंड ओनली 1 क्लास, दैट इज एट 12 PM. ओके, एंड दिस सेशन विल ऑलवेज बी रेगुलर. ये सेशन कभी भी बंद नहीं होगा, ये सेशन हमेशा चलता रहेगा इस टाइम पे, ताकि आप लोगों को ईयर लॉन्ग, ठीक है, पूरे साल फूड साइंस के प्रॉपर क्लासेस मिल पाए. ओके, सो आई नो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉर्मेंट कंडीशन में होंगे. इट्स लाइक कि भाई एग्जाम खत्म हुआ है. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू टीच फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग में, क्या पढ़ सकते. जैसे हम देखें कि FSSAI के CBT 2 एग्जाम में फूड पैकेजिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. सो देयर आर, इफ आई कंसिडर दिस फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग पोर्शन, देन फूड पैकेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम फूड पैकेजिंग वर आस्क्ड इन कंपैरिजन टू फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में फूड पैकेजिंग से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे. ओके, सो मैं आपको फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फूड लॉस और FSSAI पोर्शन ऑफ असिस्टेंट एग्जाम, ये चीजें पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, आकाश सर फूड प्रिजर्वेशन पढ़ाएंगे, हिना मैम फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड मीनाक्षी मैम एंड वर्षा मैम फूड साइंस, क्योंकि फूड साइंस इज वास्ट, बहुत बड़ा टॉपिक है. सो इजीली आपको ये 2 टीचर्स प्रॉपर टाइम पे चीजों को कंप्लीट करा सकते हैं.
Okay, now the exams, this class is for state FSO. Yes Kokila, this class is for state FSO. So let me show you. So this class is for FSSAI CFSO TO and all the state food safety officers. Okay, all the state food safety officers. ठीक है, these classes will be for everyone. This class will be in bilingual. This class will also be conducted in English और हिंदी में भी मैं चीज़ों को repeat करूँगा. Okay, so it will be a bilingual class. Okay, because there are students from all over India. No one knows Hindi. Not that everyone knows Hindi and not that everyone knows English. ठीक है, सभी लोगों को हिंदी नहीं मालूम है या फिर सभी लोगों को अंग्रेजी नहीं मालूम है. So इसलिए this class will be bilingual. Okay, now daily this class will be at 12 PM. ये class रोज 12 बजे होगा. Classes again मैं बता देता हूँ. There will be right now in this week there will be 5 classes. In this week there will be 5 classes. Okay, and from next week there will be 6 classes. Monday Meenakshi ma'am, food science. Tuesday myself, food processing and packaging. Wednesday, tomorrow there will be class. Don't think कि दशहरा है तो क्लास नहीं होगा, कल सारे क्लासेस होंगे. ठीक है, देखो जहां पर एक दिन की छुट्टी होती है हम वहां पे क्लास बंद नहीं करेंगे. ठीक है ना यार, हम लोग ऐसे भी रूम में जाके कुछ कंटेंट का काम बनाएंगे अपने फ्लैट पे, तो बेटर है कि आके यहाँ पर क्लास ले लें. ठीक है, सो क्लासेस विल नॉट स्टॉप फॉर 1 day और 2 days. हाँ, जहाँ पे इट्स लाइक दिवाली, एवरीवन गोज टू देयर होम, तो इन दैट केस ओके वी विल बी हैविंग सम हॉलीडेज फॉर यू. बट टुमारो देयर विल बी classes as usual. Tomorrow Hina ma'am's class, that is food microbiology. On Thursday Akash sir will take class on food preservation. Friday Varsha ma'am, again food science. And from next week onwards, Saturday I will take class again on FSSAI assistant portion. Okay, FSSAI assistant portion. Obviously this class is also not exactly assistant. In this food laws will be there. इसमें आपके food laws भी रहेंगे. That will also be helpful for FSSAI CFSO and TO. So basically this class will be for everyone, for FSSAI CFSO, TO, assistant, everyone. Okay, and for others, that means CFSO, TO and state CFSO, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So Saturday's class will be for everyone and other classes will only be for CFSO and TO. Very good afternoon. Good afternoon Babita, Yashita, welcome to the session. Okay, so this is an overview of your YouTube classes. Sir, is there any paid batch? See, right now you don't have any exam, that is, you know, a big exam in front of you. I guess you have only 2 exams, that is Himachal Pradesh FSO and Haryana FSO, right? These are the 2 exams that you have, and Telangana FSO. So there will be a batch. We will come with a batch. Okay, comprehensive batch for these 3 state students. Okay, ये तीनों state के जो students हैं इनके लिए हम एक batch लेके आएंगे, but not now, maybe in the next week. ठीक है, maybe in the next week. But for other students, जो बाकी students हैं, those who are not eligible for these exams, at least keep preparing on YouTube. ठीक है, YouTube पे prepare करते रहिए, so that whenever your state FSO exam will be notified, that you will be ready. ठीक है, आप अगर देखोगे लास्ट के कुछ टाइम में यू हैड तमिलनाडु फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, असम फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, देन यू हैड वेस्ट बंगाल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम. ओके, सिमिलरली यू हैव नाउ यू हैव हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड तेलंगाना एफएसओ. ठीक है, सो इसी तरह महाराष्ट्र का भी आएगा. ओके, महाराष्ट्र का आई गेस आया है या फिर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे. सो यस, एग्जाम्स विल बी नोटिफाइड. ठीक है, basically there was a time when these exams used to be notified at a gap of 1 year or 2 year, and students didn't know about this exam. उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन the time is changing now, students are getting aware. ठीक है, बहुत सारे students बोलते हैं कि that we came to know about FSSAI and state FSO exam from this channel, so I'm really grateful to those students. Okay, so that you think that at least we are helping you in some way. Okay, so all these exams, इसका notification हम आपको बताएंगे. जिस भी स्टेट में जब भी आएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे. अगर मैं इनके पोर्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, ओके, सी नाउ देयर आर सम कॉमन सिलेबस. नंबर 1 इज फूड साइंस.
Now food science will be asked in all the FSO exams irrespective of states. Okay, number 2 is food microbiology. Number 3 processing, packaging and preservation. So these are common, ये तो आएंगे ही आएंगे, these will be asked. That means these the classes for these are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, right? What about the Saturday's class? So the fourth one is food laws. अभी अगर food laws की बात करूं तो ये TSPSC में पूछा गया है. In Telangana State Public Service Commission Food Safety Officer, they have asked about food laws. Plus, each and every state food safety officer might have one or more subjects that will be basically extra to all the existing syllabus. For example, Telangana में पूछा गया था about public sanitation services. So we covered this portion in the paid batches. Okay, public sanitation services was covered in paid batches. Okay, so similarly, whatever extra portion will be asked, you should stay assured that we are going to cover it. Okay, sir, in HPFSO training is compulsory before. Yashita, HP, okay, Himachal Pradesh. So Yashita, I need to go through the notification once again because we were a bit busy with other exams and I didn't go through the notification. Today we will do a notification show also if possible, today or tomorrow. I'll also do a notification show. एक notification show भी करेंगे and I will give you all the details. Okay, I'll give you all the details regarding the exam. Okay, your classes will be running on YouTube. You will be having a paid batch next week. Okay, for Haryana and HP Himachal Pradesh. See, we will start with these 3 subjects. हम ये 3 subject के साथ start करेंगे. Okay, ये complete होने के बाद जब syllabus आएगा जो भी extra subject होगा हम उसको भी cover करेंगे. Let's say that syllabus has a complete new subject, so don't worry. As far as possible, we will be covering each and every subject. We won't be leaving anything. हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी रहेगा उसको हम cover करेंगे. Okay, but for the time being, YouTube sessions will really help you. Okay, and as you know that हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई YouTube पे कुछ भी पढ़ा दिए चले गए और पेड में पढ़ा रहे हैं. We don't do that. In both the places, we do provide you quality content. Okay, चाहे वो YouTube के questions हो or the theory portion in your paid batches. Okay, and let me tell you, both the sessions are important for you. Many students ask, sir, is it after enrolling in the paid batch, is there any need to watch the YouTube sessions? Paid batch में enroll करने के बाद YouTube sessions पढ़ने की कोई ज़रूरत है? देखो, whenever we are talking about paid batches, in the paid batches, maximum of the portion is completed through theoretical class. Okay, in case of YouTube classes, it is MCQ. So I don't expect you to watch all the classes live. Okay, I would suggest you to go and watch the paid classes live and at least watch the YouTube sessions at a recorded speed of 1.5x or 2x. ठीक है, 1.5 गुना या 2 गुना के जो स्पीड पे रिकॉर्डिंग आपको देखना है, बस वो भी आपको एक दिन में एक क्लास मिलता है, तो आई डोंट थिंक कि इतना आपके लिए बर्डन होगा. ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे, एंड आई एम सेइंग यू दैट द वे स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड इन FSSAI, यू आर आल्सो गोइंग टू परफॉर्म इन द सेम वे इन योर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर. ओके, अच्छा होगा ही होगा, नो डाउट. ओके, सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स. ओके, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, सो जस्ट डोंट वरी कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है और सब कुछ मिक्स कर दें. Many students were confused about food microbiology. See, now these are such exams which are basically not to be prepared in 1 month or 1.5 month, right? इसके लिए आपको regular study की ज़रूरत है. You have to study regularly. Subhi, there is no fees now. Okay, there is no fees right now. Okay. So basically जो आपका paid batch है, you don't have any paid batch right now. The paid batch will be brought in next month, and we are actually planning to launch instead of a batch, we are planning to launch a small selection kit. So basically it will be like a food safety officer or Mahapack or FSSAI Mahapack. Okay, which will have all the upcoming batches for the next 1 year, just like Mahapack, but I'm not sure. Okay, but yeah, we will be coming up with a small batch for FSO. ठीक है, और जितने भी students का FSSAI में selection नहीं हुआ था, उनको भी ये FSO का batch मिलने वाला है. ठीक है,
सर FSSAI TO का डिटेल, अभिषेक डिटेल्ड एनालिसिस आ रहा है, ठीक है, हमें बस इसी हफ्ते में हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी देंगे FSSAI का, ठीक है. आई वाज चेकिंग योर ग्रुप. ओके सर, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु एंड प्रिपेयरिंग फॉर तमिलनाडु FSO. ओ दैट्स ग्रेट कोकिला. ओके, एंड यस वी विल हेल्प यू फॉर दैट, डोंट वरी एट ऑल. ओके सर, FSSAI TO का डिटेल्ड एनालिसिस अभिषेक अभी करेंगे. आप लोगों ने ग्रुप में क्वेश्चन भी भेजा है, ठीक है, सो हम लोग उसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे. ओके, द थिंग इज एनालिसिस में क्या होता है कि द मेन पॉइंट इज दैट ऑप्शंस, स्टूडेंट्स क्वेश्चन याद रखते हैं बट उन्हें ऑप्शंस याद नहीं रहता है. और जब तक हम अपने हिसाब से आंसर आपको बता सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, ऑप्शंस में कुछ और होगा, मतलब बेसिकली सेम आंसर बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और सिनोनिमस वर्ड, ठीक है. तो इसके वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वरना जनरली ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. ऑलमोस्ट इट रिमेन्स सेम, बट यस वी विल ब्रिंग यू अ डिटेल्ड एनालिसिस. आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड दैट. ओके, so this is your plan of work, ठीक है ना. The three major subjects that you should focus right now for FSO is food science, food microbiology, processing, packaging and preservation. If there is any state FSO, let's say, which does not have प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन और फूड माइक्रोबायोलॉजी, यू कैन स्किप दैट, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो जिसमें अगर इनमें से कोई चीज नहीं है, ठीक है. और जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम कवर करेंगे, जैसे कि फूड लॉज, पब्लिक सैनिटेशन सर्विसेज. ओके, सो एक्सेप्ट द स्टेट जीके जीएस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल TSPSC FSO हैज स्टेट जीके जीएस. एक्सेप्ट द स्टेट जीके जीएस वी आर गोइंग टू कवर all the technical portion, that means the food science, food processing, microbiology and food laws portion. Okay, for state GKGS you have to refer to a book or you can refer to any other YouTube videos. That is, for example, let's talk about Telangana FSO. So you can refer to the state, you need to learn the state GKGS, so you can refer to Adda 24/7 Telugu channel. Okay, so there you can learn about your state GKGS. Let's say you are from Haryana. Okay, I don't think Haryana में आएगा GKGS, but if Haryana में GKGS आता भी है तो आप क्या कर सकते हो ना, सिंपली SSC Adda 24/7 के चैनल पे जाके वहां पर भी आप GKGS देख सकते हो, वही GKGS आपके काम आएगा. प्लस आप कोई भी अपना जो लोकल GKGS का बुक है ना वो भी उठा के पढ़ लोगे तो बहुत होगा. हार्डली देयर विल बी 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स. ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है. वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ. सो 80 out of 80. Sir, I am Tamil Nadu, sir. Welcome Nagjyoti, welcome to the session. Okay, so all these sessions will be focused for all the states FSO. Okay, and these classes will be conducted in bilingual. Not only this, even as far as I have remembered, I don't think classes were bilingual. I mean, all the students were comfortable in English language itself. ठीक है, क्योंकि जितने भी students हैं ना फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल थे. तो जहाँ तक मुझे याद है, all the classes were being conducted in English only instead of English and Hindi. Okay, but yeah, English will be a compulsory language. Okay, classes will be conducted in English. And अगर कोई ऐसा है जिसको अंग्रेजी में दिक्कत होती है तो भाई हिंदी में भी होगा क्लास, ठीक है. Both the languages will be used, Hindi and English, but rest assured that there will be no such sentence which will only be explained in Hindi and won't be explained in English. या फिर कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो सिर्फ अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने के बाद हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा. Everything will be explained twice in both the languages. दोनों ही सारी चीज़ों को दो बार एक्सप्लेन किया जाएगा दोनों ही लैंग्वेजेस में, ठीक है. एज फार एज FSSAI एंड FSO एग्जाम्स आर कंसर्न, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को इंग्लिश समझ में ना आए, बट स्टिल ओके, we will see about that. Okay, so this is, so start practicing these three portions. Okay, so for the once again, for those students who have joined late, this is your schedule. Monday Meenakshi ma'am food science, Tuesday Sandeep food processing and packaging, Wednesday Hina ma'am food microbiology, Thursday Akash sir food preservation, Friday Varsha ma'am again food science, and Saturday I will be taking the FSSAI food laws, basically food laws class of food laws. And this class will be, yes, this will be relevant for everyone, especially for FSSAI assistant and other students. But this class will start from next week, not this week. ये जो class है ना, ये अगले हफ्ते से start होगा, इस हफ्ते से नहीं. Okay. Sir, in our state FSO, biotechnology is there. Subhi, which state? See, biotechnology, you have Meenakshi ma'am. Okay, she has a PhD in genetics and genetics and plant breeding. So biotechnology and seed science is her expertise, and she will teach you. What I said, is there any extra subject in any state FSO, then we will bring class for that also.
कोई भी स्टेट एफएसओ में अगर कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है तो हम आपको उसके लिए भी क्लास प्रोवाइड करेंगे. इफ देयर आर एनी टीएसपीएससी स्टूडेंट राइट नाउ इन दिस यूट्यूब चैनल, सो लेट अदर्स नो दैट यस वी हैव कवर्ड द पब्लिक सैनिटेशन सर्विस एंड फूड लॉज क्लास ऑल्सो. ठीक है, सो वहां पे टीएसपीएससी में पब्लिक सैनिटेशन सर्विस और फूड लॉज के बारे में पूछा गया था और उसके भी क्लासेस हमने कवर किए हैं. वी हैवंट लेफ्ट एनीथिंग except your state GKGS. We are going to cover each and every technical part in your state FSO, whatever is asked. Okay, so in the upcoming paid batch that will be launched next week, okay, or might be mid-October, okay, all these portions will be covered first. After that, whatever is when the syllabus is released, whatever the extra portions will be there, those will also be covered. There will we won't compromise with any of the technical subject, whatever it is. If it demands that we should learn first, then we should teach you, then yes, we are going to do that. Okay, because see, the time is changing, new subjects are being introduced. Okay, it's not only a new thing for you, it's also a new thing for us. Okay, the only difference is that we have some experience and we can adapt to the changing situations, and we will help you in adapting to those changing situations. Okay, if there is a new subject, public sanitation services was completely new. Okay, I guess Hina ma'am taught public sanitation services, and Hina ma'am did a really good job. Okay, when she went through the subject, okay, she sorted out all the points, she went through so many books, and finally she compiled the the public sanitation services classes and taught it to you. Okay, so your teachers on agriculture Adda 24/7, at least I can tell that they are from, you know, their academic background was really strong. Okay, so I don't think they will have any problem in teaching you any portion. Okay, so everyone here has completed their post graduation from a professional subject. Okay, me from agriculture, Akash sir from horticulture, that's a part of agriculture, Meenakshi ma'am from, she has completed her PhD, not only post graduation, okay, from plant breeding and genetics. Okay, that's why we call her Dr. Meenakshi Rathi. Okay, plant breeding and genetics. Okay, Varsha ma'am again from forestry. Okay, so the whole team is, you know, they have the potential to teach you any subject. Okay, so don't worry at all. Whatever new subjects will be introduced will be given to you in the batches or on YouTube, whatever, does not matter. Okay, on YouTube we will be focusing on these main subjects. Okay, apart from this, all those minor subjects will be provided in the paid batches. Okay, in your stay, sir, my qualification BA, but I want to do CFSO. What can I do, sir? And my date of birth. Sorry, Vishu, BA students are not eligible for food safety officer. You are eligible for FSSAI assistant. Okay, not for state food safety officer or FSSAI CFSO. Sir, are you taking food regulations and maximum residue level? Yes. So from Saturday, next Saturday, not this Saturday, from the next week Saturday, I will be taking food laws class, and in this food laws I will cover all the regulations, all the maximum and minimum residue levels, everything. Okay, I will be covering in this Saturday class. Okay, Tuesday class will be food processing and packaging, and Saturday class will be regarding the food regulations, the FSSAI regulations, the minimum residue level, maximum residue level. Not only about FSSAI, the minimum and maximum residue level that has been mentioned by Codex Alimentarius Commission as well as the European Unions. Okay, you might, if you are a bit familiar with agriculture related current affairs, okay, so you might have observed that European Union has recently rejected so many consignments of basmati rice and tea from India, and the main reason was they have decreased the maximum residual level of pesticides, which was way above than the Indian limit. Okay, and so this was the reason the consignments were rejected. So Indian government is now trying to bring such varieties which have a resistance, so that instead of spraying pesticides, the crops can fight the diseases or the insects by themselves. Okay, so basically they won't be affected, they will be resistant. Okay, recently that happened with rice, basmati rice. Okay, 3 new varieties were released last year, and a feedback is being taken this year. Okay, last week only a feedback was being taken by Indian Agricultural Research Institute, PUSA. Okay,
Very good afternoon, Himani. Welcome to the session. Okay, so stay assured that Agriculture Adda 24/7 is going to continue the FSO classes year long. Does not matter if there is a vacancy or not. You can even come and study for your college exams also. All the food science student, food technology student, you can come and just read for your semester exams also. I know this won't be enough for your semester exams, but yes, we can help you in that preparation. Okay, sir, in paid batch live sessions would have recordings or not? Yes, Priyanka, all the paid batch sessions of the paid batches will have recorded recorded classes. Okay, there will be recorded classes in the paid batch. Okay, so you don't need to worry about recordings. Okay, they will be provided to you. Okay, they will be provided to you. The recordings will be provided. Okay, the recording generally takes 2 to 3 hours to get uploaded, or 3 to 4 hours. We take a maximum limit of 24 hours, but generally it gets uploaded in 3 to 4 hours. Okay, so recordings will be available for everyone. Okay, so anything else that you want to ask? You have any doubt you want to ask? Today it's like a webinar, it's like a guidance session. You can ask everything, whatever you want, whatever about State Food Safety Officer or about FSSAI, anything, whatever you have in your minds. Regarding batches, guys, okay, so see, right now we don't have any batches. Batches will be launched next week or in the mid-October. So basically we will launch one batch which will focus on FSSAI, CFSO, TO, State FSO. Okay, so this will have food processing and packaging and preservation. Then you have microbiology, you have food science and food laws. Okay, so you will have all these portions in this particular batch. Okay, so get ready to get connected. And for assistant students also we will launch a batch in which you won't get math, English, reasoning. Okay, if there are any assistant students, आपको math, English, reasoning नहीं मिलेगा. आपको जो क्लास मिलेगा ना, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ FSSAI के बारे में, मतलब फूड लॉज के बारे में. Okay, and apart from this, if let's say बीच में यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे हरियाणा एंड HP के स्टूडेंट्स आएंगे. सो फॉर देम, when their syllabus is released, if there is any extra subject like TSPSC FSO, we will also add this extra subject in this batch. Okay, but not for the upcoming notifications. If there will be any upcoming notifications, then we'll bring a new batch where their extra subjects will be added. But yes, if Haryana and HP has any extra subject, it will be added, except the state GKGS. Okay, we won't be providing you the state GKGS, we will be providing you the technical knowledge portion. Okay, welcome Priyanka. So today's class is food processing, right? It's food processing class 1. So let's understand what exactly is food processing. क्या है food processing? देखो, food processing के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, so basically हम food में बहुत सारे different चीजें consume करते हैं. We generally consume different types of foods. Let's say wheat, rice, okay, pulses or dal, okay, different types of grams, etc. Okay, but do we consume the way they are grown? क्या जैसे खेतों में उगाया जाता है, क्या हम उस तरह से खाते हैं? Okay, sir, TN government announced exam they conduct October 3rd week tentatively. That short period we will complete the portion. Is it possible, sir? October 3rd week. Nagjyoti, what you can do is you can enroll if you want a paid batch. See, in YouTube it cannot be completed. Okay, and if I will launch a paid batch today also, then also it won't be completed by 3rd week of October. Okay, so what you can do is you can enroll in the FSSAI CBT2 batch. Okay, that's 2000 rupees or something. I will tell you at the end of the class. Okay, so you can enroll in that batch. You will get all the recordings. Okay, and whatever I will arrange how you will get the PDF. I will check that. Okay, I'll make sure that you also get the PDFs. Okay, so you can join that batch if you want the paid classes. Okay, and let me tell you what is there in that batch. In that batch you have food processing, preservation, then you have food processing, preservation, and
food science and food microbiology. And if you want the food laws class also, you can join the TSPSC food safety officer batch. Okay, so let's go ahead. Okay, so food processing, you have wheat, rice, pulses and dal. Okay, so do we consume the way it is grown in the field? क्या जैसे उगाया जाता है हम वैसे consume करते हैं? जी नहीं. Generally what the way we consume is roti or bread, cookies, etc. Isn't it? So this is how we consume. So how is this possible? This is possible through processing. Okay, so wheat needs to be processed, wheat needs to be milled in order to obtain atta or the wheat flour. Okay, and then from that wheat flour products like roti, bread and cookies can be obtained. What about rice? Okay, rice again needs to be milled. So basically rice is not milled, paddy is milled. ठीक है, milling किसका किया जाता है? Paddy का किया जाता है. Milling of paddy is carried out in order to produce rice. ठीक है, so rice का एक जो बाहरी layer होता है, ठीक है, the outer layer of the paddy, that is known as the husk, is generally removed in order to produce the rice. Now this rice is again processed and the outer layer is made into finer texture, and this rice is used for consumption. That is what we call white rice. If the polishing is not done, then it is known as brown rice. If it retains the bran layer, अगर bran layer retain करता है, एक bran layer होता है हल्का सा reddish brownish color का, अगर वो नहीं निकाला जाएगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम brown rice कहते हैं. We call it brown rice. Okay. Similarly, we also have parboiled rice. Okay, so basically the paddy with husk is generally boiled or parboiled in order to give the rice a more firm texture. ठीक है, सो जो चावल है ना, जो धान होता है ना, धान को पानी में हल्का फुल्का सा बॉयल किया जाता है, स्टीमिंग जैसा किया जाता है, ताकि जो चावल है ना वो और मजबूत बन जाए. Why it is done? It is done so that the breakage, the loss due to breakage of rice particles will be minimized and all the vitamins and nutrients can be conserved in the rice. Because while polishing, all these vitamins and nutrients are generally washed away, or not exactly washed away, they are milled away. Okay, they are just during the polishing process they are lost. ठीक है, polishing के दौरान generally ये सारे vitamins, minerals और nutrients खत्म हो जाते हैं, polish हो जाते हैं. लेकिन अगर आप parboiling करोगे तो ये फ्यूज हो जाते हैं, और ये फ्यूज होने की वजह से फिर वो लॉस नहीं होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल पारबॉइल्ड राइस. द जनरल राइस दैट वी ईट इज नोन एज रॉ राइस और कच्चा चावल. ओके, जो चावल हम जनरली खाते हैं उसको रॉ राइस या कच्चा चावल बोला जाता है, उसको बॉयल नहीं किया जाता है. Parboiled rice, I know in Hindi it is known as bhuja hua chawal, and in Hindi, Odia, Bengali it is also known as usna chawal. Okay, so I don't know about other languages, so yeah, but these two names are used for parboiled rice. Okay, so in case of parboiled rice, okay, so all those nutrients are conserved. But how it is conserved? कैसे conserve करते हैं? कैसे हम उसको बचाते हैं nutrients को? So basically a irreversible fusion is seen. ठीक है, a irreversible fusion is seen. Okay, so this irreversible fusion of the starch results in conserving the nutrients. ठीक है, ये जो irreversible fusion होता है starch का, तो क्या होता है कि इसके वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? न्यूट्रिएंट्स को बचाया जा सकता है. ओके, नाउ दिस इरिवर्सिबल, व्हाई इट इज नोन एज इरिवर्सिबल? बिकॉज वंस द स्टार्च गेट्स फ्यूज्ड विद द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स द प्रोसेस. एक बार जब फ्यूज हो जाते हैं, जो स्टार्च होता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ, उसको अलग करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसीलिए हम इसको जनरली क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं पारबॉइलिंग को. The one and only vitamin that is super important and is generally conserved in parboiling is vitamin B12. विटामिन B12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है राइस में, इसीलिए पारबॉइलिंग में विटामिन B12 बहुत ही अच्छे से कंजर्व होता है. Okay, so you have to take a note of this. Okay, similarly if we'll talk about wheat, ठीक है, हमें रोटी चाहिए, हमें ब्रेड चाहिए, हमें कुकीज चाहिए, उसके लिए हमें आटा चाहिए या मैदा चाहिए, and this is produced from wheat. So basically it goes through a milling operation. ठीक है, एक milling operation होता है जिसमें जो स्टार्च होता है ना वो क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है. Okay, a
little difference in a proper way of if you are going to crush or grind it in an improper way, then instead of releasing the powder, it will just become a paste. So yes, the proper moisture level is also important. एक जो proper moisture level है वो बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है wheat में. Similarly आपके pulses और दाल आते हैं. So दाल is basically split pulses. Okay, so जो let's talk about red gram. Okay, so talking about red gram, okay, so whatever is harvested from the plant, that is what we call red gram or pulses. Okay, so once it is washed, it is conditioned, it is processed, and then it is split for that dal purpose is what we call dal. Okay, so pulses and dal are not exactly the same. Dal is the split pulses, whole pulses are not known as dal. जो whole pulses होते हैं ना, जो टूटने से पहले का जो पल्स होता है, ठीक है, मान लो उड़द मान लो, मूंग मान लो, अरहर मान लो, तो इनको हम दाल नहीं कहते हैं. इनको दाल तब कहते हैं जब इनको तोड़ के दाल बनाने के लायक बनाया जाता है. ओके, सो दीज आर पल्सेस और दाल. सिमिलरली आपके बार्ले, सोरगम, टी प्रोसेसिंग, कॉफी प्रोसेसिंग, कॉफी एंड टी आर बेवरेजेस. दीज आर नोन एज स्टिम्युलेटिंग बेवरेजेस. मतलब जब आप इनको पीते हो ना, आप स्टिम्युलेट होते हो, आप ज्यादा एक्टिव होते हो. ठीक है, यू माइट हैव सीन, कॉफी पिया, चाय पिया तो थोड़ा सा एक्टिवनेस फील होता है. लोग बोलते हैं ना, यार एक चाय पी के आते हैं, थोड़ा एक्टिव फील होगा. दैट इज ड्यू टू कैफीन. ओके, अब चाय के कंपेयर, चाय में तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट मिलता है कैफीन का, बट कॉफी में कैफीन का अमाउंट ज्यादा होता है. ओके, सो जब ये पी के आते हैं, सो दे फील मोटिवेटेड, दे फील नॉट मोटिवेटेड, दे फील अटेंटिव. ठीक है ना, माइंड अलर्ट हो जाता है, अटेंटिव फील करते हैं. ठीक है, इसीलिए कभी भी पहले क्या नहीं बोला जाता है, पहले कभी भी नहीं बोला जाता है टू ड्रिंक एनी कैफिनेटेड ड्रिंक बिफोर स्लीप. अगर आप सोने से पहले कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक पियोगे ना, तो वो नहीं काम करेगा. सर एफसीआई का कोर्स परचेज करना है, जरूर विपिन. कौन सा कोर्स परचेज करना है? टेक्निकल, जनरल, डिपो या फिर मतलब AG3 मैनेजर, किसका कोर्स परचेज करना है बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा उसी हिसाब से. ठीक है, सो दीज आर द सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ फूड प्रोसेसिंग. हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल ऑल्सो गो थ्रू दीज इन डिटेल. वी विल स्टार्ट टू सी हाउ आई हैव प्लान द क्लासेस. सो बेसिकली ईच एंड एवरी वीक आई विल गिव यू अ गुड पोर्शन ऑफ थ्योरी. ओके, प्री वर्कआउट, राइट. ओके, सो आई विल गिव यू अ गुड पोर्शन ऑफ द थ्योरी फॉर द फर्स्ट 30 minutes, and the next 30 minutes we will have MCQs based on that theory. So I guess this will work really best. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे who will be new to this classes. Okay, हाँ, रात को भी दिक्कत देता है. yes, okay, देता है भाई. ठीक है, प्री वर्कआउट पीने से पूरा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट हुआ, आपने पी लिया एंड यू आर नॉट गोइंग टू वर्कआउट, देन इट स्टार्ट्स इचिंग ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, मतलब मेरे केस में हुआ है कि आई हैव सीन, मतलब I couldn't go to workout but I had a pre-workout and I saw some मतलब red हो गया. Okay, so it was very uncomfortable situation. Okay, so होता है. Okay, but so that is basically due to the presence of stimulants. Now pre-workout is something different where you have caffeine but you have other stimulants also which stimulates your blood vessels. Okay, so they increase the blood flow. Basically your body becomes active, but if you won't be active, then it will be a problem. When your body becomes active, if you are also active, okay, I mean you are doing some physical activity, then there won't be any kind of problem. Yeah, tingling and redness. Clear? बताइए विपिन, कौन सा कोर्स लेना है एफसीआई का? मैनेजर, टेक्निक, पहले तो मैनेजर या AG3 का लेना है, और जनरल का, डिपो का, अकाउंट्स का या टेक्निकल का, किसका लेना है बताइए, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा. बाकी सारे बैचेस 7 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं. आप मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहां पर जो भी कोर्स चाहिए कैटेगरी में जाके उस पर क्लिक करके बाय नाउ के बाद आप Y291 कोड यूज कर सकते हो. ठीक है, yes, arginine, citrulline, malate, etc. Okay, so these are some of the things that you need to remember in प्रोसेसिंग में ये जो चीजें है ना, आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मिलिंग इज डन, हाउ कंडीशनिंग इज डन. ओके, कंडीशनिंग जनरली पल्सेस में किया जाता है. ओके, मिलिंग कैसे किया जाता है, लॉस कैसे होता है राइस के पार्टिकल्स का, व्हाट इज दैट एक्शन ड्यू टू विच दैट लॉस इज सीन, व्हाट आर द डिफरेंट मशीनरीज. फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट एमरी रोलर, ओके, और एंजलबर्ग हलर. नाउ एंजलबर्ग हलर इज वन ऑफ द पॉपुलर मशीनरी इन पैडी मिलिंग. ठीक है, जब धान को मिलिंग किया जाता है ना, तो एंजलबर्ग हलर एक टाइम का बहुत ही ज्यादा, आज भी ठीक है, पॉपुलर मशीनरी रहा है. हाँ, एक टाइम पे क्या होता था, उसमें शार्प चाकू होते थे अंदर, जिसकी वजह से राइस ज्यादा टूटता था. आज के टाइम पे रबर के रोलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो टूटता है ना वो कम टूटता है.
ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, यू हैव टू रिमेंबर दीज माइन्यूट थिंग्स, ओके, दिस एग्जाम विल बी सुपर इजी फॉर यू, एंड द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल इज टू अटेंड द 12 PM क्लास every day, okay. I am not asking you to attend 3 hours of class, 4 hours of class or 10 hours of class, okay. 1 hour of class daily on YouTube on Agriculture Adda 24/7 channel. And apart from this, what else you can do is, you can whenever the batch will be launched, if you are enrolling in the batch, then you will get another 4 to 5 hours of extra classes, okay, in your paid batches. We will try not to keep those classes in your YouTube timings, okay, so that it will help. Most probably it won't be scheduled in your YouTube timing, okay. So this is about food processing, okay. So the first topic that we are going to read in the next class is general food processing. Before proceeding to any particular subject, or before proceeding to any particular crop, we will go through general food processing, okay. What exactly happens in food processing, okay, how the basic processing and preservation functions work, ठीक है. कभी कभी processing और preservation ना एक साथ देखना पड़ता है. For example, drying is a processing as well as a preservation act, ठीक है. Sir, yesterday FSSAI के some post का final result आया है, okay. Let's take a look. FSSAI. ये तो मैंने देखा था, ओके. दिस इज फॉर IT असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट. अभी तक असिस्टेंट का नहीं आया है, ओके. असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट, ओके. जो ये वेरिफिकेशन हुआ है ना, सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. नाउ हियर द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, ठीक है. जब ये डिक्लेयर हो जाएगा, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, फॉर एग्जांपल यू सी IT असिस्टेंट, ट्रांसलेटर का आया है, ओके. सो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड, सो यहाँ पर उनका नेम दिया है. सिमिलरली वी विल ऑल्सो गेट फॉर असिस्टेंट CFSO TO. तो जब भी ये असिस्टेंट का आएगा, सो वी विल नोटिफाई यू, ठीक है. नेक्स्ट, क्लियर. सो these are the different processing steps that we need to study. Afterwards, crops, ठीक है. For example, paddy, wheat, sorghum, dal, okay, जितने भी crops हैं, okay, all the crops that we are going to study, okay, of the processing, okay, then preservation, okay, then the next will be packaging, ठीक है. Now there were so many questions from packaging in CFSO and TO exam. So basically, what are the different packaging materials that are used for different products, for dairy products, for cereal products, okay. सबके अलग अलग पैकेजिंग है ना. आप जिसमें मान लो कॉर्नफ्लेक्स जिसमें पैक हो रहा है, उसमें आइसक्रीम तो पैक हो नहीं सकता है. इन केस ऑफ आइसक्रीम, आई गेस आइसक्रीम क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जनरली HDPE टब्स आर यूज्ड, ठीक है. छोटे छोटे पॉली टब्स यूज किए जाते हैं, दैट इज जनरली मेड फ्रॉम HDPE, हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन, ओके. इस तरह की चीजें हम जनरली देखने वाले हैं, ओके. So we will properly start our classes. So this was a bit of guidance session rather than classes, okay. So we'll start our classes from next week, okay. So next week I'll be taking classes on 2 days, that is Tuesday and Saturday, okay. And right now you don't have any batches. If you want to if there are some students, I guess Nagjyoti was asking. So Nagjyoti, what you can do is go to all courses, agriculture, okay, FSSAI and TSPSC FSO. If you are going to choose FSSAI subject, then you need to choose this batch, FSSAI CFSO and TO CBT 2 mains, okay. And for assistant student, CFSO student, you also have recorded batches, okay. And if you want to have the food loss classes also, okay, so instead of choosing FSSAI, you can choose TSPSC FSO. If you will search here, then also you will get, okay. You can choose this batch, okay.
So the validity here is 6 months, and the TSPSC syllabus also has food laws. Okay, the coupon code is Y291. Apply it, and here it is. This is 2759. In the mobile application, this will be 2639. Okay, and FSSAI CBT2 batch will be something around 2000, I guess. If you want, you can enroll in the batch and you can watch all the classes. Most of the classes will be recorded, but we will be having some doubt clearance class in TSPSC, because TSPSC exam, it's yet to be conducted, and we will be conducting some more sessions here. Okay, so if you want, you can all go ahead and enroll in the TSPSC batch. Okay, all these classes are in English. Okay, even if somewhere Hindi is being used, both the languages were being used, not only Hindi. Okay, so you can go and enroll and start your preparation for your already you might have started your preparation for Tamil Nadu food safety officer, but if you have any doubts, obviously you can go through it, and I will be arranging some classes in this so that those doubts can also be clarified. Okay, and when I will arrange the class, I'll make sure that you are also added to the Telegram group for the PDFs. Okay, so this is it, guys. We will meet in the next session. Okay, that is next Tuesday, again 12 p.m. Okay, but yeah, so all the different faculties will have their classes on different days at 12 p.m. So don't forget to stay connected. Sir, Andhra Pradesh FSO syllabus will be same as for Telangana FSO. Yes, most probably Krishnamurthy, it will be same. Okay, the same. But just make sure that we are not going to provide state GKGS. Okay, let's say 20 question from state GKGS, you have to prepare that. Okay, now I cannot teach state GKGS in Telugu. Okay, though I know a bit of Telugu, but I don't know the GKGS of Telugu. Okay, GKGS of Andhra Pradesh or Telangana or Tamil Nadu. Okay, so we cannot take up that subject, but yeah, all the technical subjects will be covering. Let's say you will get a new subject, biotechnology, then we will also be covering that. Okay, no problem in covering technical subject, but don't expect us to cover the state GKGS. Okay. I am Jyoti AP. Sorry, I can't remember. Great initiatives. Yeah. So Jyoti, so basically, yes, the syllabus will be same as that of TSPSC, even though something will be more, but yeah, things won't be less here. Okay. Great initiative, sir. Thank you so much for coming up with this new whole pre-prep course in long term for food students, and I am highly grateful. Thank you so much, Yashita. We are planning to make all the students aware about food science and its opportunities. You know, I'll tell you something. On Sunday, I met one of my friend. He had completed his graduation in food science and technology when I was doing my, so basically our university had 3 campus in our in that particular place. Okay, one was agriculture campus, one was agriculture engineering, and the other one was food science campus. Okay, so my friend was from food science campus. He had completed his food technology, BTech food technology. Okay, so he was also saying that right now he is in a private company as a consultant. Okay, he is earning really well, but the thing is, now people don't know that these kind of jobs are also available in food science. He also said that you people are really doing great. He also didn't know properly. I mean, his college authorities also called him and asked that what you are doing, and he said, when he said about the nature of his job, they were also surprised that these kind of jobs exists for food technology students. There is a lack of awareness, not only for food science and food technology students, all the technical stream students, let it be agriculture, let it be other like oil technology and other subjects. Okay, there is a lack of awareness. Okay, and we'll make sure that these we will fill that gap, and we will make you aware about all these notifications and all the opportunities that you can have for a particular stream. Okay. So we'll meet, guys, in the next session. Okay, I hope that you people will like the session, and do share the session, please. Okay, so this session will be focused on FSO from all the states. Okay, session will be conducted in English and Hindi. अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही सेशंस को कंडक्ट करेंगे हम, ठीक है. सो आई गेस देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम. ओके, एंड आई गेस today's class was mostly in English. Okay, so you people already know that yes, your faculties are well versed in English and they can teach you in English properly. You don't have to worry about that, right? And talking about myself, I have completed my graduation in agriculture from a university of Andhra Pradesh, and yes, I had to
study everything in English, okay, because I didn't know Telugu, they didn't know Hindi, okay. So all of your faculties have completed their graduation or post graduation or PhD from such a place where they had to come study in English also, so you don't need to worry about that. Okay, so we will meet in the next session. Till then, take care, bye bye, stay safe. And if you are going to enroll in any of the previous courses, you can use the code Y291 for enrolling. Okay, a happy Dasera to everyone. Okay, and we will also have class tomorrow. Tomorrow you have Hina ma'am's class of food microbiology, so make sure that you attend it. Okay, we are not going to give you any holiday tomorrow. Okay, so let's meet, guys. Till then, take care, bye bye, stay safe, and don't forget to like and share the session, as well as subscribe to Agriculture Adda 24/7. Also, do join the Telegram channel Agriculture Adda 24/7 official for regular updates, classes and quizzes. Okay, till then, take care, bye bye, and stay safe.